फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे SST DAV पब्लिक स्कूल क्लास 8 साइंस, उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग करेंगे। और चैप्टर 1 है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। All living organisms are made up of cell. Second number, the dash provides rigidity and protection of the plant cell. इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। थर्ड नंबर, all cellular activity are controlled by the न्यूक्लियस हो जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर, द डैश नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू। 6 नंबर, इट वाज डैश who observed cells for the first time, इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे जो कि वे सेल को खोजे। रॉबर्ट हुक है जो कि वे सेल का खोज किए थे 1665 में। और ये मधुमक्खी का छत्ता से भी आप सब देख सकते हैं, उसमें छोटा छोटा सेल होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं बी नंबर। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, गूगली कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पैकिंग सेंटर। सेकेंड, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड, क्रोमोसोम्स, जीन्स। 4, डेड सेल, कॉर्क। 5, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग आएंगे सी नंबर पे। सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सेल ऑर्गेनल्स विच एक्ट्स एज अ स्टोरेज बैग फॉर अ सेल इज नोन एज वॉक्यूल्स। hence egg is a single cell. Third number, the nucleus is separated from the cytoplasm by the, इसका आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Fourth number, which of the following will not be found in an egg cell, have liver cell and an amoeba, इसका आंसर होगा सेल वॉल। 5 नंबर, which of the following represents the correct sequence, इसका आंसर होगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। 6 नंबर, which amongst the following pair can be found only in a plant cell but not in an cell wall, इसका आंसर होगा सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। अब हम लोग आते हैं डी नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट, लिस्ट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल। 1 का आंसर, द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल आर लोकेशन एंड फंक्शन। Second number, distinguish between unicellular and multicellular organisms. Given 2 examples of each. Unicellular organisms are made up of a single cell. Example, Euglena and amoeba. Multicellular organisms are made up of many cells, humans and birds, etc. Third number question, given reason for the following. A number, the cell is called the structural and functional unit of life, इसका आंसर हो जाएगा
all organisms are made up of cell. A cell is capable of independent existence due to this cell is called the structural function unit of life. 3 का B, plant cell are more raised than the animal cell. Answer, cell wall is present in plant cell. Due to this, plant cell are more raised than animal. 4 number question, which cell organelle is known as the powerhouse of cell? Why is it so called? 4 number का answer, mitochondria is known as the powerhouse of cell. Mitochondria are the site of cellular respiration. Energy is produced during this process. Due to this, mitochondria are called the powerhouse of the cell. Name the cell organelles responsible for imprinting color to the leaves and fruits of a plant. Chloroplast is responsible for imprinting color of the leaves. Chloroplast is responsible for imprinting color of the fruits. 6 number, what are cilia and phalangia? Write one similarity and one dissimilarity between the two of them. Cilia and phalangia are extensions on the cell membrane. These help in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. Cilia are much smaller than phalangia. 7 number, in onion peels, cells and check cells are observed through a microscope that state the two major difference that the observer is likely to find. The two major differences that the observer is likely to find are: in onion peels, cells are arranged in row. Cell wall is present. In check cell randomly arranged. Cell wall is absent. देख लीजिए. यस, हम लोग आते हैं 8 नंबर पे. 8 number, classify the following into cell, tissue and organs: skin, fat, cell, RCB, blood, ear, muscles. सेल में हो जाएगा फैट सेल और RBC. टिश्यूज, ब्लड एंड मसल्स. ऑर्गन, स्किन एंड ईयर. आते हैं हम लोग ई नंबर पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, all cells are an organism do not have the same shape. Justify the above statement by drawing at least 3 different cell type found in human beings. Here answer. This figure clearly show the liver cell irregular in shape. Fat cell is spherical and a smooth muscle cell is spindly shaped. This is so the all cells in an organism do not same shape. ये रहा ये तीनों को आप सभी को ये और ये तीनों का आप लोगों को फिगर बना लेना, ये तीनों का, और उसके बाद फिर उसका आंसर लिख देना है. सेकेंड नंबर, वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस. क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग कॉल division.
When the cell is ready to divide, the chromosome is nucleus consists from thicker thread-like chromosomes. Chromosomes are responsible for inheritance of characters for one generation to the next generation. Third number, with the help of well-labeled diagram, highlight three differences between a प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में होता है सेल वेल इन प्रेजेंट, क्रोमोप्लास्ट इज प्रेजेंट, वॉक्यूल आर वेरी लार्ज। एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। वॉक्यूल्स आर स्मॉल as well as vacuums are not present in human bodies। इसका फिगर अभी देते हैं। ये रहा, ये फिगर आप सभी को बना लेना है। देखिए इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इस एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है इसमें नहीं। वॉक्यूल्स हो गया इसमें। ये लार्ज होता है, हाँ ये लार्ज, ये स्मॉल छोटा। Write the function performed by the following cells organelles. First, A. Endoplasmic reticulum. Network of membranes which provides channel for transport of materials in the cell and helps in synthesis of proteins. सेकेंड नंबर में है Golgi complex. Sac-like structures, these help in processing and packing of materials produced by the cell. C number, nucleus, a specialized structure in the cells bound by the nuclear membrane responsible for controlling all cellular activities. D number, chromoplasts, the plastids associated with the different colored part of the plant like fruits, vegetables and flowers are called chromoplasts. E number, vacuoles, sac-like membrane bound structures in cell used for strong various materials. It stores excess of water and waste products. F number, mitochondria, these are rod-shaped or a spherical structure. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. The cell membrane is a very important component of a cell. Who is damaged to the cell membrane likely infect the functions of the cell. When the cell membrane gets damaged, it exposes the cell's contacts to external environment. This result is a stoppage of all functions of the cell and eventually to cell dead. 6 number, define the term cell for plants
animals. Name the different organelles that make a cell. Explain why none of these is called the cell, the structural and functional unit of life. This answer. The cell is the basic structural, functional, and biological unit of all known organisms. A cell is the smallest unit of life, and therefore cells are often described as the building blocks of life. The different organelles that make a cell are nucleus, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, lyosomes, vacuole, and ribosomes. All, all these cell organelles work together to perform different functions of the cell. None of this is capable of independent existence, so they are not called the structural functional unit of life. Thank you guys.